Volume of revolution. Consider area bounded by curve y equals to x square, x-axis and line x equals to 2 and x equals to 5. अच्छा well, so previous हम एक application definite integrals की देख चुके हैं कि we can find this area under the curve bounded by x-axis and the vertical lines x equal to 2 and x equals to 5. Now इस वीडियो में हम another application of definite integrals देखेंगे, that is using definite integrals we can also find volume of revolution. So what is volume of revolution? तो before defining volume of revolution हम देखेंगे what is a solid of revolution. So simple a solid of revolution क्या हमारे पास, suppose we have a shaded area like this bounded by x-axis to vertical lines and the curve y equals to x square. If we rotate this shaded area about x-axis through 360 degree, अगर हम इसको रोटेशन देंगे this shaded region को about x-axis means considering x-axis as a center या line of rotation, तो then the solid obtained is called solid of revolution. And the volume of that solid is called volume of revolution. So इस केस में अगर हम इस solid को rotate करें तो जो हमारे पास इस shaded part को हम अगर rotate करें तो जो हमारे पास solid form होगा वो कुछ इस तरह का बनेगा. तो this is the solid obtained when the curve y equals to x square and line vertical line x equals to 2 and x equals to 5 से जो area bound हो रहा है उसको rotate करें हम about x axis. Now the question is find the volume of revolution, means volume of this solid, that is solid of revolution. तो simple हमारे पास formula है to find volume of revolution for a given solid. Well, the volume V obtained when the function y equals to f of x is rotated through 360 degree about x-axis between the boundary lines x equal to a and x equal to b is given by v is equal to integral a to b pi y square dx. या चूंकि यहाँ पे pi constant है तो this formula can also be written as pi integral a to b pi integral a to b y square dx. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है जो हमने याद रखना है वो ये है कि इफ़ द शेडेड पार्ट इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस तो देन जो वॉल्यूम है उसमें वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होगा. वी विल इंटीग्रेट वाई स्क्वायर नॉट वाई एंड वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. Similarly, if the curve x equals to f of y is rotated through 360 about y-axis between boundary lines y equals to a and y equals to b, in that case volume of revolution will be calculated by using this. Acha, well, since again pi is a constant, so this formula can also be written इंटेग्रल a to b x square dy. तो अगर हम रोटेट करेंगे शेडेड पार्ट को अबाउट y एक्सिस तो इन दैट केस वी विल इंटीग्रेट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y. इस तीन चीज़ों की हमने केयर करनी है. एग्जाम्पल, find volume obtained when the shaded region is rotated through 360 degree about x axis. अब जो shaded part है वो bounded है by x equals to 1 and x equals to 2 and हमने इसे रोटेट किया अबाउट एक्स एक्सिस थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री. सो बाय यूजिंग द प्रीवियस फार्मूला जो वॉल्यूम हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी. ए इज 1, बी इज 2, जो कि हमारे पास वर्टिकल लाइन से वाई स्क्वेयर डी एक्स. वेल वाई हमारे पास 9/3x प्लस 2 है तो पाई टाइम्स इंटेग्रल 1 to 2 9 divided by 3x plus 2 whole square dx. तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वॉल्यूम है. अब हमने इस डेफिनेट इंटेग्रल को एक्सपेंड करना है. सो वेल दिस डेफिनेट इंटेग्रल कैन बी रिटन, स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं. सो पाई इंटेग्रल 1 to 2 9 square is 81 divided by 3x plus 2 whole square dx. 81 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से फ्री कर लें. 81 पाई इंटेग्रल फ्रॉम 1 to 2. रैशनल एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो इसको न्यूमरेटर में मूव करते हैं. 3x plus 2 raised to the power minus 2 dx. Well, now it's in integrable form. Formula of integration यूज करें. The base function is a linear function ax plus b form.
तो रूल हमारे पास था, वी विल अप्लाई पावर रूल, add 1 in power, divide by resulting power, and then multiply denominator by this constant number 3, and apply limits, write limits like this 1 to 2. Okay, well, so this is equals to 81 pi divided by -3. -3 से divide करेंगे तो it's -27 pi, or 3x plus 2 raised to the power. This can be written 1 over 3x plus 2 with limits from 1 to 2. Now apply limits. This is equals to -27 pi. Upper limit apply करेंगे तो upper limit is 2. So 1 over 3 times 2, 6 plus 2 is 8. Minus lower limit apply करेंगे तो lower limit is 1. So this is equals to 1 over 3 plus 2, 5, 1 over 5. So -27 pi into 1 over 8 minus 1 over 5, which is equals to -27 pi times -3 divided by 40, which is equals to minus plus 81 pi divided by 40. So this is required volume. Since volume is in cubic units, so we can write cubic units are units cube. 81 pi over 40 is required volume when this shaded area is rotated about x-axis. Another example. Find volume obtained when shaded region is rotated through 360 degree about the y-axis. Well, जो lines है हमारे पास वो y equals to 2 और y equals to 5 है. Simple जो हमने फार्मूला पढ़ा है की पॉइंट में वो अप्लाई करेंगे. Required volume is v is equal to pi integral from limits 2 to 5. क्योंकि बाउंडेड बाय y एक्सिस है, सो वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y. एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे. एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है y, सो y dy. हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू y, सो वी विल रिप्लेस एक्स स्क्वायर, वी विल एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y. नाउ y इज इंटीग्रेबल. जस्ट पावर रूल अप्लाई कर दें, एड 1 in power, divide by resulting power, and write limits with it, limits 2 to 5. Okay, well, pi को as it is लिखें. Now apply limits. y को upper limit से replace करें 5 square over 2, lower limit से replace करें 2 square over 2, which is equals to pi as it is 5 square over 2, 25 over 2 minus 4 over 2, which is equals to 21 divided by 2 pi. So this is required volume in this case. Another example. Find volume of solid obtained when the shaded region is rotated through 360 about the x-axis. Well, अब जब हम shaded region को rotate करेंगे about x-axis, तो जो हमारे पास solid बनेगा उसमें ये वाला जो region है हमारे पास, that will be shown as a hollow region. We are rotate, the shaded region is bounded by lines x equals to 0 and x equals to 2. So जब हम shaded region को, just like we calculate the area bounded by under a curve and a line, bounded by a curve and a line, same case यहाँ पे हमारे पास है. This shaded area is bounded by a curve and a line. So ये जो हमारे पास area है under the line and x-axis, ये area unshaded है. That's why there will a hollow part in that solid जो हमारे पास आएगा when we rotate this shaded region about x-axis. So किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन फॉर दिस सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन? तो सिंपल, जस्ट लाइक वी डिड इन एरिया का क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट वॉल्यूम अंडर द कर्व एंड सबट्रैक्ट वॉल्यूम अंडर द लाइन. सो द वॉल्यूम इज, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज वॉल्यूम अंडर कर्व माइनस वॉल्यूम अंडर लाइन. सो वॉल्यूम अंडर कर्व, सिंपल जो हमारे पास फार्मूला था, सिंस इट्स बाउंडेड बाय x-axis, so limits are from 0 to 2, pi 0 to 2, y square dx. For curve, y square is 9 minus 2x square, so it's 9 minus 2x square dx minus pi 0 to 2 for volume under generate of the solid generated by the line is, equation of line is, it's a horizontal line with an equation y equals to 1, so it's simply 1 square dx. 1 square is 1.
Since the limits are same, taking pi common, we can combine these two integrals, which are equals to 0 to 2, 9 minus 2x square minus 1 dx, which is equals to pi integral 0 to 2, 9 minus 1 is 8 minus 2x square dx. Integrating these expressions, we get this is equals to pi is a constant, दोनों terms integrable हैं, 8 का integral 8 is a constant, its integral is 8x minus 2x square पे power rule, add 1 in power, divide by resulting power with the limits from 0 to 2. So this is equals to pi times, now apply limits, upper limit apply करेंगे तो 8 times upper limit is 2, 8 times 2 minus 2 over 3 times 2 cube minus lower limit is 0, तो दोनों टर्म से हमारे पास 0 आ जाएगा, which is equals to pi times 16 minus 16 divided by 3 and minus 0. This is equals to 32 divided by 3 pi. So this is required volume when the shaded region is rotated about x-axis. That's it for this video. Hope to see you in next video. Take care and Allah Hafiz.